All right, now let us begin with the education section, and that is important and would be covering most of the PYQs along with whatever is there in the NCRTs. Okay, so some of the questions, let us begin with the starting section only. So the very first question is William College. Just drop the important year along with who established it, plus the theme or objective behind setting it up. William College. Then you have Calcutta Madrasa. Okay, or Calcutta Madrasa. And then after that we have the Sanskrit College. So these three are important. Please try to answer them. Put the year plus who established plus theme. William College by Wellesley 1800 for training of the officers, correct. Alright, Sanskrit College and Calcutta Madrasa. And what about Sanskrit College? Jonathan Duncan. So Jonathan Duncan was associated with the Sanskrit College. Sanskrit College is important again. And Calcutta Madrasa, Warren Hastings. Okay, and after that we have Asiatic Society of Bengal. Asiatic Society of Bengal. Sanskrit College, correct. Calcutta Madrasa, correct. 1781. Asiatic Society of Bengal is important. So Asiatic Society of Bengal, William Jones, 1784. Okay, Sir William Jones. Now, as per which act, there was allowance of 1 lakh rupee towards the education. Which act allowed for the grant of 1 lakh rupees towards the education? 1813, exactly. Okay, 1813 is again important. Now comes the PYQ, means a question from 2018 prelims. Okay, 2018 prelims. So the question is General Committee on the Public Instructions. General Committee of Public Instruction. Anyone can explain what is this? GCPI. See, this is important again. Try to recall, and if not, at least think about the PYQs. This is a PYQ. (1823). Okay, but what was it? You are almost there. First of all, this committee was associated with the education. Okay, General Committee on the Public Instructions was related to the education. And if most of you remember the education dispute, like no Orientalist and Anglicist, so that was the dispute going over here, and it was associated with the same. Now, what was the Macaulay Minute? Macaulay Minute.
You should know the years as well. Why? Because to tackle the questions when they are asking the chronology. Okay, so to solve the questions which are associated from the point of view of the chronology, we have to be very well, like, no, we have to remember it anyhow. That is important. That is really important. Okay, because suppose, like, no, if they just give this GCPI, then followed by they give, like, no, Macaulay minute followed by the Wood Dispatch. Now you should know how to arrange them, because education chapter is really important. They are asking from this section. So adapting education, Western education, 1835, though whatever you have mentioned is very much common. Okay, there is nothing new. So I would request that, no, try to add something new. Whatever you have added is something like, no, जिसने एक बार भी पढ़ा हुआ है उस बच्चे को पता होगा. So there is nothing new which you have added so far. But anyway, I appreciate your efforts to at least remember the things. But no one have discussed about the infiltration. Oh, that's good, Naman. Okay, so downward infiltration theory, which we have discussed in the previous section as well. But just remember this theory. Okay. And then Rudky College, which we have discussed, was established by the Thompson. Now comes the Adams report. Anyone can tell me what is Adams report? This is a PYQ again. Even if I'm like, no, if my memory is going correct, it has been asked thrice by UPSC. Not in these years, but in, like, no, 1990s, 2000s. Okay, when we discuss about that period, they have been asking such type of questions. Okay, and if it is a PYQ, it is our responsibility, if not much, तो at least हमें एक दो पॉइंट तो पता होने ही चाहिए. ठीक है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आपको नहीं पता है, आपके साथ वाले बच्चे को पता है, तो डेफिनेटली, लाइक, नो, वो आपसे एक एज पे आ गया. एंड नाउ द पॉइंट है इज, जो उन्होंने पूछा था इज द ईयर. दे हैव नॉट आस्क्ड द एजेंडा. अगेन लेट मी, लाइक, नो, make you clear that उन्होंने एजेंडा नहीं पूछा. दे आस्क्ड द ईयर, एंड ईयर में भी दे आस्क्ड यू टू, लाइक, नो, प्ले विद द क्रोनोलॉजी. तो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें क्रोनोलॉजी तो कैसे भी पता होनी ही चाहिए. Okay, so yeah, William Adams, correct. And local schools, then they asked about the improper education and why so. So this is important, just remember it. Fine. Now let us move towards the Wood Dispatch. Again, when this question was asked, GCPI in 2018 prelims, the same year there was a question on the Wood Dispatch. Now on Wood Dispatch, what they did is, they, like, no, sort of they asked ki just try to figure out ki which statement is correct over Wood Dispatch. So the thing is, now you should know at least 1 or 2 or 3 point over the Wood Dispatch, so that you can, like, no, you can solve such type of questions. They can ask, like, no, following are the statements with relation to Macaulay minute. So, like, no, find out the correct statement, or, like, no, try to find out ki what is actually resembling the Macaulay minute or Wood Dispatch or whatever. So just remember the key points, if not much. तो जो key points दिए हुए हैं आपके जो भी sources, whatever you are referring, just remember those things. Charles Wood, 1854, correct. Then Magna Carta wala point you forgot, which we discussed yesterday. Vernacular language and 1854, Dalhousie, correct. After that, women के लिए, like, no, women education they asked for, and private grants were allowed. Okay, private grants plus women education they focused upon, plus Magna Carta. So these are again some of the key points which you should remember. Plus उन्होंने ये जो थ्योरी थी डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसको रिमूव कर दिया था या बैन कर दिया था. ठीक है, तो you have to remember this point again. Now there are other commissions or, like, no, committees are also there. Like, for example, Hunter was there, then Sadler was there, and Raleigh Commission was there. तो ये वाले जो commissions है,
I personally don't think कि they would be asking in detail, like no, जैसे वो dispatch पे उन्होंने पूछा आपसे कि like these three statements are given in relation to this. Now try to find out कि which is there, like which is related to this. But like no, as far as this relay or hunter is concerned, I don't think means after analyzing the PYQs, obviously, I'm just putting my view, but I don't think कि उससे वो बहुत ज़्यादा पूछेंगे because again like no, ये भी जो reports है relay की report थी, तो it is really given so comprehensively, so it is not possible कि we can remember each and everything possible, but what we can do is like moreover what is possible from our side is the keyword. Okay, for example, if we discuss the relay commission or hunter commission, so I would recommend just remember the year plus who started it plus only one keyword. Okay, so that no अगर कुछ आ जाए तो you can handle it. Okay, एंड आने में क्या आ सकता है कि क्रोनोलॉजी आ सकती है या फिर किसने स्टार्ट किया में डेफिनेटली दे विल नॉट आस्क यू कि लाइक नो वुड डिस्पैच था किसने स्टार्ट किया. दे वुड गिव यू इन लाइक नो सॉर्ट ऑफ मैचिंग में वुड डिस्पैच के सामने डलहौजी मैकॉले के सामने लाइक नो आपका बेंटिक हो गया और ऐसे करके वो दे देंगे पेयर्स देन ओनली वन ओनली टू ओनली थी या लाइक नो नन ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच्ड. So this is something जो कि यूपीएससी का न्यू पैटर्न है. we know very well. Okay, only one या only two वाला जो पैटर्न है. So this is something you have to remember. Okay, and you cannot say कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते because ये ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस हैं. ठीक है, हाँ पैटर्न हम नया ओनली वन ओनली टू वाला, ऐसा नहीं है कि हंटर कमीशन कुछ नया है. Isn't it? You people are like no, you people know that. So that is not something new, but we have to just like no. We have to just figure out the way how we can solve the questions with more easiness. Okay. Now, so let us discuss in fast. Pehle hunter commission. Who started it? Just mention this word, this much only. It would suffice the process. Hunter commission or relay commission. Anyone remember? Who started or who established? Basically, I would say. Sadler commission. डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है आप सभी को, जस्ट पॉइंट याद रखने होंगे. वो तो डेफिनेटली उसका कोई लाइक नो एक अल्टरनेट नहीं है, तो वो आपको करना ही होगा. इवन वर्धा योजना तो एक पीवाईक्यू है और वो डिटेल में उस पर पूछा गया था, तो इट मीन्स अब वर्धा योजना को आपको प्रिपेयर करना होगा अच्छे से. लाइक नो उसमें एक आधा पॉइंट याद रखने से आई डोंट थिंक कि काम चल सकता है, क्योंकि दे कैन शूट. ओके, दे कैन शूट दैट क्वेश्चन. डजंट मैटर आप जब भी प्रीलिम्स दे कैन आस्क. सो वो थोड़ा सेफ और सिक्योर होगा अगर हम अपनी तरफ से इन पॉइंट्स को प्रिपेयर रखें. एग्जैक्टली, हंटर वाज रिलेटेड टू सर विलियम हंटर, दैट इज फाइन, बट इन हुज टाइम पीरियड आई वांट टू नो. एके Relay Commission, Lord Curzon, exactly. Hunter Commission, Lord Ripon, exactly. And like no, Ripon वाला जो था, that was more or less focused upon the primary education. Okay, primary and secondary education. Whereas Relay Commission जो था उसका फोकस था यूनिवर्सिटीज. ठीक है, बिकॉज क्या होता था यूनिवर्सिटीज पे उस टाइम में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल था, और एक्सेसिव कंट्रोल होने की वजह से जो एजुकेशन है उसका स्तर या उसका लेवल बहुत ज्यादा गिर चुका था. तो उस करिकुलम को हैंडल करने के लिए यूनिवर्सिटीज को बेसिकली रेगुलेशन या उनपे लाइक नो मॉनिटर लगाने के लिए दे बेसिकली डिड दिस. ओके, रिले कमीशन. सो रिले कमीशन इनके सभी के टाइम पीरियड along with who started or who established, you should know that. Fine. Now, there is something new called as Thompson plan. Okay, though ये Thompson वाला ही है, but they have given it like no Thompson plan. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, Macaulay would dispatch, Hunter, Galley, Sadler, we have discussed. Sergeant is important, and Vardha Yojana again I would say that is important. Okay. सो जो वर्धा योजना थी, वर्धा योजना में बेसिक एजुकेशन पे फोकस किया गया था, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो जस्ट रिमेंबर दैट. और उसको थोड़ा सा आपको लाइक नो जो पीवाईक्यूज है उनको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें डेफिनेटली देना है. एंड लाइक नो आई वुड अप्रिशिएट इफ यू पीपल हैव द नोट्स ऑफ द पीवाईक्यूज ओनली. लाइक नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली लाइक नो ये गलत है कि अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठ जाएं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास पीवाईक्यूज के सॉर्टेड नोट्स होने चाहिए, एंड दैट वुड डेफिनेटली रिफ्लेक्ट ऑन द डी डे. ओके, अगर अभी आपको उसका रेलेवेंस नहीं समझ आ रहा है तो नॉट एन इशू,
बट ऑन द डी डे यू वुड डेफिनेटली लाइक नो, इफ नॉट मच तो आपको मेरे शब्द तो याद आएंगे उससे, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट मेक द नोट्स इफ पॉसिबल ऑफ द पीवाईक्यू। और ये जो आपका डिस्कशन है ना, अगर कोई भी वे पॉसिबल है तो आप इसका भी प्रिंट आउट लो। आई डोंट नो हाउ, but if any way out, because someone was asking yesterday. So what I think is there are two ways. First way is, for example, like no, जो answers comprehensive, for example क्षितिज का ये वाला आंसर काफी comprehensive है, ठीक है, तो you can just copy paste it and like ये वाला जैसे आंसर हो गया, तो इन आंसर्स को you can copy paste and take a print out of this। बहुत easy है और feasible है, ठीक है। इसको वर्ड में कन्वर्ट करो और पीडीएफ में कन्वर्ट करो एंड देन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड फिर उसका एक प्रिंट आउट लो, ठीक है। बेटर लाइक नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे अच्छी अप्रोच है ये वाली, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग इन दिस वे, हैंस आई एम रिकमेंडिंग। ऑलराइट, ओके। सो ये वाला जो सेक्शन है एजुकेशन वाला मोरलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हैव अ गुड ग्रिप ओवर दिस सेक्शन एंड रेस्ट वी हैव डिस्कस सम पीवाईक्यूज। ओके, तो पीवाईक्यूज में विलियम कॉलेज को कभी नहीं भूलना है। विलियम कॉलेज इन 10 सालों में 2 बार पूछा गया, ठीक है। यू नो कैसे पूछा गया वो आपने देखे ही होंगे पेपर्स। ओके, एंड तो ये सभी देख लेना एक बार चीजें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन वाले चैप्टर में चीजें तो बहुत ज्यादा है बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिलेक्टिव होके आई वुड रिकमेंड अच्छे से करना। फाइन, अब लेट अस मूव टू नेक्स्ट।